नमस्कार फ्रेंड्स, कीप लर्निंग विद एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेक इन इंडिया कैंपेन। और आज के इस सेशन में हम जानेंगे एक जॉब ओपनिंग के बारे में जो कि एक्सपोर्ट मैनेजर के लिए है। इसमें इंटरनेशनल सेल्स एंड मार्केटिंग जो कि एफएमसीजी एंड बेवरेज कंपनी के लिए वर्क करती है। तो यहाँ पे जो जॉब रोल है वो एक्सपोर्ट मैनेजर के लिए है और जॉब लोकेशन है वो उद्योग विहार सेक्टर 18 गुड़गांव है। ठीक है, तो कंपनी का नाम देख लेते हैं, ओएनएस ग्लोबल कॉर्पोरेशन। ओके, इसका जो हेड ऑफिस है वो गुड़गांव में है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सीटीसी जो जॉब यहाँ पे आपको जो सैलरी होगी 1.1 लाख टू 1.5 लाख पर मंथ प्लस परफॉर्मेंस इंसेंटिव मिलेंगे। एक्सपीरियंस आपको चाहिए 5 से 10 साल का। एफएमसीजी एंड फूड बेवरेज एक्सपोर्ट प्रीफर कर यहाँ पे प्रीफर किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट करती है कंपनी और उसके प्रोडक्ट क्या है। तो प्रोडक्ट की बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन व्हीट फ्लोर, दलिया, ग्राम्स फ्लोर, मैदा इस रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है और एक्सपोर्ट करती है अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, ओके, एंड यूरोप। और टाइमिंग की बात करें तो 10 to 6:30 और मंडे टू सैटरडे वर्किंग है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में जॉब रोल क्या रहेगा, क्योंकि जो जॉब रोल है वो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी इस जॉब रोल के लिए इंटरेस्टेड है उसको इन चीजों का नॉलेज होना चाहिए। क्या इसके रोल रहेंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, वो एक एक करके समझ लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी एंड टू एंड एक्सपोर्ट ऑपरेशंस। मीन्स कि जैसे ही ऑर्डर आया आपको प्रोडक्शन टीम से कांटेक्ट करके प्रोडक्ट रेडी करवाना है और फ्रेट फॉरवर्डर की हेल्प से कंटेनर प्लांट में लगवाने हैं, उसके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं और एक्सपोर्ट करना है। इसके अलावा जब फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है तो उसकी कंफर्मेशन बायर को देनी है। तो ये एंड टू एंड प्रोसेस होगा, इसके अंदर सारी एक्टिविटीज आती है। ठीक है, यहाँ पे आपको इंटरनेशनल मार्केट को एक्सपेंड करना है। ठीक है, नए कस्टमर लाने, जो आप समझ सकते हैं कि जो भी क्लाइंट होते हैं उनको उनसे विजिट करके मार्केट को बढ़ाना है। डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट करना है आपको। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड स्टैट्यूटरी कंप्लायंस जो है गवर्नमेंट के वो फॉलो करने हैं। इसके अलावा लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेशन एंड गवर्नमेंट लाइजिंग विद स्मूथ ग्लोबल ट्रेड ऑपरेशंस। तो ओवरऑल रिव्यू की बात करें तो एंड टू एंड प्रोसेस आ गया, जिसमें नए कस्टमर बनाने हैं, फिर वहां से जो ऑर्डर आएगा उसके अगर एक्सपोर्ट करना है, चिप फॉर अपॉइंट करने हैं, एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट बनाने हैं, जो भी गवर्नमेंट के कंप्लायंस है कस्टम क्लियर कराने इसके अकॉर्डिंग, और पेमेंट के लिए बैंक के थ्रू डॉक्यूमेंट प्रोसेस करने हैं, उसमें भी जो गवर्नमेंट के रूल्स है उसको फॉलो करना है। तो ये सारी एक्टिविटीज यहाँ पे हमें नॉलेज होना चाहिए अगर आप इस जॉब रोल को करते हो। तो बात कर लेते हैं की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो यहाँ पे इंटरनेशनल सेल्स मार्केट डेवलप करना है। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट करना है ऑन बोर्ड ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, जब इंटरनेशनल मार्केट में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है आपके ओवरसीज में, उनसे कांटेक्ट करना है। इसके अलावा जो भी इंपोर्टर्स होंगे उनसे मिलना है और मार्केट को डेवलप करना है। ओके, इसके अलावा मॉडर्न ट्रेड पार्टनर्स जो होते हैं ऑनलाइन भी हम देख सकते हैं कि कैसे इनसे विजिट किया जाए। तो उनके थ्रू भी हमें यहाँ पे इन तक पहुंच के एक नई मार्केट की डेवलप करनी है। इसके अलावा जो एरिया है वो कौन सी कंट्री में करनी है, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट सी एंड यूरोप। तो आप देख सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में काफी इंडियंस रहते हैं, तो वहाँ पे भी इंडिया के प्रोडक्ट खाए जाते हैं। इसके अलावा अफ्रीका में आपको राइस टाइप के प्रोडक्ट चलते हैं, आटा तो सब तरफ चलता ही है। तो बेसिकली जो अफ्रीका पूरी कॉन्टिनेंट, मिडिल ईस्ट जो कि एशिया का पार्ट है, और यूरोप, यहाँ पे आपको मार्केट डेवलप करनी है। इसके लिए एनालिसिस इंटरनेशनल मार्केट ट्रेंड्स, कॉम्पिटिटर एक्टिविटी एंड प्राइसिंग बेंचमार्क। ओके, तो जो जो भी इंटरनेशनल मार्केट ट्रेंड्स है उसके अकॉर्डिंग को प्रोडक्ट डेवलप करके आपको एक्सपोर्ट करना है और आपको अंडरस्टैंड करनी है एक्टिविटी ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। आपके रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उस टाइप के जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में कितने अवेलेबल है और वो कॉम्पिटिटर्स क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा प्राइसिंग बेंचमार्क, ये सारों पर आपको ध्यान रखना है। बात करें एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन की, तो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन उनको हमें बनाना है, जैसे हैंडल करते हैं, जैसे कमर्शियल पैकिंग लिस्ट, शिपिंग बिल, बिल ऑफ lading, एयर बिल, सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। तो ये जो बेसिक डॉक्यूमेंट आपको इसका पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा बात करें इंश्योर कंप्लायंट की, तो एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी का आपको पता होना चाहिए। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक बुक है गवर्नमेंट की, जो कि हर 5 साल में डेवलप होती है। इसका चैप्टर 2 है, उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी है। वो उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए, वो आपको मतलब एक तरह से पूरा नॉलेज उसका होना चाहिए। बात करें डेस्टिनेशन कंट्री रेगुलेशंस की, तो जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो जो डेस्टिनेशन कंट्रीज के इसके रेगुलेशंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं। जैसे हम फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें तो क्या वो यहाँ से लेबोरेटरी टेस्ट से वेरीफाइड होना चाहिए प्रोडक्ट की ये प्रोडक्ट खाने योग्य है कि नहीं है। तो इस चीज़ों के लिए भी यहाँ पे जो इम्पोर्टर कंट्री है वहाँ पे फसाई के जो नॉर्म्स है वो इंडियन गवर्नमेंट के हैं, वो वहाँ पे गवर्नमेंट वहाँ की जो क्या है क्या रिक्वायरमेंट करती है उसको हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा फूड सेफ्टी एंड लेबलिंग नॉर्म्स जो है, फूड सेफ्टी एंड लेबलिंग नॉर्म्स जो प्रोडक्ट के ऊपर पूरी डिटेल्स लिखी होनी चाहिए कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और उनकी क्या क्या कितने वैल्यू को ये कंटेंट्स करते हैं। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन भी इस पे होना चाहिए। तो लेबलिंग का भी इस पर काफी ध्यान रखना है। गवर्नमेंट एंड लाइसेंसिंग यहाँ पे मैनेज एपेडा रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल ऑनगोइंग कंप्लायंस। जो एपेडा जो रजिस्ट्रेशन होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रमोशन काउंसलिंग के अंडर आता है ये। तो इसमें इसको रजिस्टर करना अपने प्रोडक्ट को और उसको टाइमली रिन्यू भी करवाना है। तो आपकी लाइसेंसिंग जो रहेगी डीजीएफटी, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसलिंग ऑफ द एग्रीकल्चर, फसाई, कस्टम, गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड कोऑर्डिनेट विद गवर्नमेंट एजेंसीज एंड रिक्वायर्ड। सो ये सारी चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें लॉजिस्टिक इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन की, तो यहाँ पे आपको सीएच एंड फ्रेट फॉरवर्डर के साथ कांटेक्ट करना है, शिपिंग लिंक के साथ काम करना है और स्मूथ शिपमेंट एग्जीक्यूशन करवाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो ऑर्डर आपके पास आया और उसके अकॉर्डिंग आप एक्सपोर्ट नहीं करवा पा रहे हो, आपको उसके अकॉर्डिंग एक्सपोर्ट भी करवाना है। ठीक है, वर्क क्लोजली विद प्रोडक्शन एंड क्वालिटी एनालिसिस, पैकेजिंग, फाइनेंस एंड सप्लाई चेन। तो आपको प्रोडक्शन टीम के साथ, क्वालिटी एनालिसिस के साथ, पैकेजिंग, फाइनेंस और सप्लाई चेन, इन सब के साथ एक एक्सपोर्ट को करने के लिए जो जो भी टीम्स इन्वॉल्व होती है उसके साथ कोऑर्डिनेट करना है। फाइनलाइज एक्सपोर्ट प्राइसिंग, पैकेजिंग एंड सेटिस्फेक्शन लेबलिंग एंड डिस्पैच टाइमलाइन। ठीक है, आपको प्रोडक्ट की प्राइसिंग फाइनलाइज करनी है। यहाँ पे समझना है कि प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कैसे निकाली जाती है। ठीक है, एक्चुअल प्राइस क्या है, उसके बाद एफओबी क्या लगेगा, अगर सीआईएफ टर्म में तो कितना प्राइस हो जाएगा, तो उसकी प्राइसिंग निकालनी है। पैकेजिंग की स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर करनी है। जो कमर्शियल इनवॉइस बनवाना है उसके ऊपर आपकी जो प्रोडक्ट का बेसिक चार्ज क्या है, इस पर ट्रांसपोर्टेशन कितनी लगी, ठीक है, कस्टम क्लियरेंस कितनी लगी और सी फ्रेट कितना लगा, टोटल कॉस्ट निकाल के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है। तो इसकी एक्सपोर्ट प्राइसिंग हमें करनी है। पैकेजिंग स्पेसिफिकेशंस जो भी रिक्वायर्ड होती है वो हमें करना है। इसके अलावा लेबलिंग करना है कि प्रोडक्ट के जो इंग्रेडिएंट है उसकी डिटेल्स पे मेंशन है कि नहीं है, ताकि इंपोर्टर कंट्री में प्रोडक्ट फंसे ना हमारा। डिस्पैच टाइमलाइन जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें ये करना है। इसके मॉनिटर शिपमेंट शेड्यूल्स, पेमेंट टर्म्स एंड एलसी। तो आपको शिपमेंट शेड्यूल जो है आपका उसको मॉनिटर करना है, पेमेंट टर्म्स क्या है वो समझनी है, एलसी की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, अगर एडवांस है तो उसकी कंप्लायंस फॉलो करने। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कैंडिडेट प्रोफाइल की। तो 5 to 10 ईयर एक्सपीरियंस इनको चाहिए फूड एंड बेवरेज कंपनी में। स्ट्रॉन्ग नॉलेज चाहिए आपको, स्ट्रॉन्ग नॉलेज एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन कंप्लायंस, एपेडा, डीजीएफटी एंड फसाई रेगुलेशन में। इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स कस्टम प्रोसीजर इसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। प्रोवन एक्सपीरियंस हैंडलिंग द इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ओवरसीज क्लाइंट। तो यहाँ पे इसका भी काफी नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा बात करें तो डोमेस्टेड द सक्सेस मैनेज एक्सपोर्ट टू द अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, सी यूरोप। ओके, तो यहाँ पे ये चीज का पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इस सेशन के थ्रू समझने की कोशिश की कि इस एक्सपोर्ट सेल्स के लिए जो बेस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हो रही है। ओके, तो दिस जॉब फॉर द एक्सपोर्ट मैनेजर, नाउ दिस वीडियो इज we are preparing in the English also. Okay, so the job opening for the export manager in sales, marketing, FSing beverage. Okay, this company is working in the product like wheat flour, dalia, grams and flour maida. Okay, and the company require the person, company name is Honest Global Corporations. They require the export manager for the international sales marketing. Okay, then location is Gurgaon sector 18, Udyog Vihar, and CTCs per month 1 lakh to 1.5 lakh, and plus performance incentive is also required. Just like if you are arranging the more customer in the international market, it's depend on the incentive. Then experience key, if you talk about the experience, the 10 to 5 year experience required in FMCG and food beverage export prefer.
Then I prefer market for this company is Africa, Middle East, Southeast Asia, and Europe. Okay, working day key. If we talk about working day, then Monday to Saturday, 10 to 6:30. This is the working. Then now we will work. We will review the working profile of the organization and what company expecting the candidate for the export manager. So the export manager will responsible for end-to-end export operations. So whatever end-to-end express operation, export operations need to handle by this export manager is like that international market expanded. So first is the person who is the export manager. He need to expand the international market. Means that you have to contact with the international countries and the product you have to bring the awareness with the peoples and by exhibitions are visiting the locations. Okay, then you have to arrange the you have to manage the distributor. Okay, export, then export documentation you need to prepare just like you receive the order, then how you will export. So export documentation set need to be prepared. Statutory compliance what is required for that government you also need to follow. Logistic coordinations also required. You have to handle the logistic and transportation and other things. Then government licensing with the ensure smooth global trade operations. So your government licensing will be smooth for these organizations. Like whatever we have, whatever export we are doing, we need to follow the export regulations. So government licensing like the custom, advanced license, EPC license, these also need to be. We have a good knowledge for these export manager jobs. Okay, if we talk about the key responsibility, then international sales market development, you have to identify and evaluate the on-board overseas distributor, importer, okay, HORECA and buyers and modern trade partners. Okay, how will you identify this? By searching the online. Okay, and you also visit and you have to contact with the distributor and what kind of product they require, so you can export from here. So first, this is you have to identify and evaluate the overseas distributor, importers, and modern trade partners. Okay, so this is the basic thing. First thing where you have to handle this. Then develop and expand the international market across the Africa. Okay, so you have to develop and expand the international market in Africa country, Middle East, Sea, and Europe. Okay, so this you have to develop and expand the market. You have to analyze the international market trends, competitor activities, and pricing benchmark. Okay, you have to check out with the international market trends. What is the international market trend related to company product? What are the competitor activities on this product? How they are changing the trends and which trend is following in the current? Need to update the product. Then you have to know the benchmark pricing. Okay, now export documentation regulation compliance. So handle complete export documentation, including these are the basic document: commercial invoice, packing list, shipping bill, bill of lading, certificate of origin, and insurance. So these the document need to prepare just commercial invoice like the document which export invoice mentioning that product related pricing and incoterm payment term and buyer. Packing list contain the details regarding the packing of the goods. Shipping bill is the advance information to export to the government regarding the shipments. Like you are exporting the goods, so you have to intimate the government by filing the shipping bill. Then bill of lading and air bill will receive through the airline and shipping line. Certificate of origin will Chamber of Commerce. Insurance document. Okay, insurance document also required for that. So you have to prepare the insurance document. Insurance compliance. So export policy, you have a good knowledge of the export import policy. Destination country regulator, food safety and labeling norms. These are the required for that. If you talk about the government licensing, then you have to manage with the PEDA registrations renewal, ongoing compliance. You have licensing with the DGFT, PEDA FSI custom, and other authorities coordinate with the government agencies like that. So this first here you have to handle this export documentation. Then you follow the compliance with the export import government policies like foreign trade policy. You have good knowledge of the chapter 2. Okay, and you also have a required the destination country regulations. Okay,
So what are the documents required for the custom clearance process in the importer country also need to be handled. Food safety and labeling norms also you have a good knowledge. Okay, then if we talk about other things which are here mentioned, so you have to good you have a good logistic handling knowledge, you have internal coordinations with the purchase team, production teams and other things. Then connected with the CHA freight forwarder and shipping line and smooth shipping executions. Okay, you have a good knowledge in this. Just appointing the CHA is a good providing good service and good competitive rates. Freight forwarder is the same. You take the quotations for that. Okay, work closely with the production QA. You have to closely work with the production team, quality analysis, and packaging and finance and supply chain. Okay, so first, for example, once you receive the order, you have to contact the production team. They will make good ready for the space before the analysis of the quality. So you are also contact the quality analysis. Packaging is the part of the packing team. Okay, and the finance, when you require the finance, then you have to contact like a payment to the CHF report like that. Shipping chain teams. Okay, the shipping chain team is the team which we supply chain team is team which we they provide the transporter and other activities. Then finalize the export pricing, packaging specification, labeling and dispatch timeline. Okay, so how you finalize the export pricing? That check out the pricing you receive from the FOB and like that. Okay, just what is the product of the goods? Okay, what is the transportation and what is the freight on that? So you have to check out the pricing by applying these all charges. Okay, now monitor and shipment schedules, payment terms and LC advance elect. Monitor shipment schedules. Okay, when you receive the order, your responsibility to maintain the all details regarding the shipment movements from when dispatched from the factory. What is the custom clearance date? What is the ship on board date? Okay, like that. So you have to monitor the track the shipments from origin to destinations. Payment terms you also need to take care like what is the payment terms you have to follow like 6 days, 30 days, and in this team if payment is not received from the buyer, then you have to contact with the buyer. Then LC and advance payment compliance also need to follow. Just sometime you receive the advance payment regarding shipment, then you can also follow that one. Okay, so profile of this company require 5 to 10 year experience, hand-on experience in the FMCG food and beverage export. Strong knowledge required for the export documentation compliance, FEDA, DGFT and FSI regulations. International logistic custom procedure are good knowledge required for that. Proven experience in handling international distributor and several client. Okay, so these are the basic things which require for that. And you also have the demonstration success managing export Africa, Middle East and Europe. Okay, so you have a good knowledge for that in these countries. So this company is providing the food related product. Okay, so you have a good knowledge of the custom clearance, compliance related food. Okay, and also the good knowledge in the destination company regulations. Destination country regulations also knowledge that what kind of food or product you're exporting, what company importer companies regulations of import related the products. So that kind of document you have to prepare first. So guys, in this session we have tried to understand the job rules for the export manager, international sales, marketing and FMCG beverage product. So guys, we are just going to end this session here. Thanks for watching this session. Have a nice day.